Hello, everyone. Welcome to the Chat Trap Show with Vikram Raval. I welcome all of you again, and I'm glad that you guys are following the show regularly. Thank you so much for all the compliments we're getting on the Dillistan inbox, and I'm glad to work on the show. I'm really happy to come up with some interesting guests every week. Saturday 7 p.m. as always, जैसे कि आप जानते हैं, हम बहुत सारे interesting guests लेके आते हैं. And yet again, we are back with a very interesting guest, very uh, someone I really respect, someone I've been following since some time. His name is Vikramjit Singh Rooprai. He's an educator. He's also a heritage activist. For him, what started as a short term hobby became a lifetime obsession. This IT professional in him helped develop few digital platforms to enable others also to connect with Delhi's heritage. He studied heritage and shared the learnings with others until one day he decided to take his part-time hobby to next level. Vikramjit left his job and became an educator. He now trains teachers on how we can use history to teach other subjects. He can also set up heritage labs in schools. He has done that, and he's done it for schools, for students, where they play games and do experiments to learn various subjects using heritage as a tool. He's also an author of a best-selling book on Delhi's monuments. Over the past several years, he had the opportunity to act as an auditor for UNESCO, Aga Khan Trust for Culture, and Education Quality Foundation of India. He has spoken from the stages of IIT, IIM, and is currently visiting a faculty at many institutions, including the National Institution of Fashion Technology and the North Cap University. So, a long list, a really long list to introduce our very special guest today, and be ready to have some get to know some amazing things about Delhi today, and of course, a lot of other things. We welcome Mr. Vikramjit Singh Rooprai. Hi Vikram, thank you. Thanks for Namaskar. having me. Namaskar. Namaskar. Thank you so much for coming to our show and taking our time. It's lovely to have you here, and we are very happy that up I and you took out some time from a very busy schedule actually. So I'm glad that आपने time निकाला because I'm sure you had a lot of other commitments which you did tell me, and we are honored that we are actually getting time from you to get to know so much about our city. As everyone knows, Dillistan is a platform where a lot of youngsters and otherwise a lot of people are following us, and we have this amazing set of audience who keep on following us, tagging each other on various things related to Delhi. So we thought really that this session for me is very special because somewhere people don't know about what Delhi is actually about. How is it called Delhi? Why is it Delhi? What actually evolved into it? We are plain simple youngsters who are born in Delhi and we live our life, we go away. But what if you get to know special things about your city which actually make a meaning to your life? So I'm really excited for this session today and I look forward to very interesting things. We're getting to know a lot of interesting things from you. So I would start with a very simple and a very interesting question. What has the lockdown taught you? Oh, lockdown has taught me that nothing is permanent, and uh, we people fail to see future. As in, Okay. what is happening right now could have easily been predicted and prevented. However, we were so busy in so many other things, and I'm not talking about the government right now. I'm talking about the individuals as well, Okay. including the government. And I'm talking about both at Right. individual level also. Since I have been working with so many international educators, I know Okay. what was happening in Europe. I knew it in November, December, and I Oh knew my how God. they are moving into that whole thing. So by February, I started preparing that okay, something bad is coming our way. And by the time I Wow. started, within 15, 20 days in March, schools and colleges, they just abruptly shut and things changed drastically. But I could have started that in November. So that Hmm. was one. Second thing that I learned was that no matter how much time you have at your hand, it's not Okay. sufficient. Sitting Oh yes. all the time at home, still I Hmm. feel that I don't have time. I'm not able to do my work.
Were you able to communicate this to others? Was it possible for you to convince other people, or were you telling this, or you were not taking it very, you know, this thing? Maybe you thought that it'll scare people or something. Actually, it is a very dicey thing, because the moment you step out and when you are not sure, I'm not a Yeah. doctor, I'm not a scientist, so I was not actually there. It's just that Right. the teachers that I was interacting with, they were telling me that situation is going bad in their country. Now, to Hmm. come here and say that the same would happen in India, Right. even I'm not 100% sure what exactly will happen, how will happen. Okay. So that's where the problem starts. Great. So I think that's something we've got to know. I didn't actually expect that. I mean, that's something I really thought that there would be something very different from like the common people. Of course, what we usually think is try to develop skills sitting at home, and that's what I expected. And that's a very very Actually, I scary yet started interesting thing. no, I started doodling. I got microfiber tip pens, and I started Oh, doodling during the lockdown. That's one thing that awesome! I developed. That's very interesting. That's very Plus, nice. I also So so my daughter's birthday was during the lockdown. okay. Unfortunately, my entire family fell sick, and for more Oh, than a oh, month, oh, almost 2 months, we guys were not able to do anything. So first oh, we got okay, out of COVID, and then for 1 month we were on bed rest. Uh, okay. in that period, both my kids had their birthdays, and we couldn't get anything from outside. We were in containment zone and all. Oh So my what God. we did, we made their gifts at home. So I Oh, luckily had some sheets of sunboard, because my dad is an architect and he had some material available. So using that right. sunboard, I made a very nice dollhouse. And from Uh-huh. my school days, like 20 years back, I had a lot of LEDs and cells, because I used to do experiment with electronics back then. Okay. So I had Okay. a kit lying with me, and luckily all that worked. So I Huh. just picked up my soldering gun and I started soldering. I created this thing with lights and everything. I made Oh a wow. nice dollhouse model for her. Very impressive. I think That's one she thing must I be did. very, really happy. I think I did it that's for the first another, time. I did it it's a for very, the must first be a time. very special gift. Oh, right Yeah. now she's playing upstairs with that only. So cute. That's very cute. That's amazing. I think we've got to know so much about you as a person because it's very important for us to start a conversation to the audience to get to know who we are talking to. And I think it's we've got to know so much about you. You're a really sweet person. I think it's an awesome experience to talk to you. And now we will be taking out a little bit knowledge from you. जो आपने इतनी सीखी है, आपने इतना इंटरेस्ट लिया है और मैं आपसे थोड़ा बहुत उस बारे में सवाल पे जानना चाहूंगा क्योंकि ऑडियंस बहुत एक्साइटेडली वेट कर रही है वी हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स राइट नाउ मैं जानना चाहूंगा सबसे पहली चीज सर कि किसी ने शायद ये सवाल पूछा है नहीं पूछा है आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मेनी पीपल हैव रेड योर बुक बट व्हाई इज दिल्ली कॉल्ड दिल्ली ये दिल्ली का चक्कर क्या है कहाँ से शुरू खैर, हुई ये है वाला शायद हम लोग क्वेश्चन दिल्ली को शायद इंद्रप्रस्थ से जानते हैं लेकिन आपका असली टेक क्या है ये वाला क्वेश्चन खैर मेरी किताब में आंसर नहीं होता है। मेरी किताब जी सिर्फ बाउलीज के ऊपर है, जो पहली किताब जो आई है अभी। जी Second one will be on forts, very soon to जी come. But जी I have done several sessions around this, ओके specifically just on the name of Delhi. ये नाम कहाँ से आता है, कोई वीडियोस बना के यूट्यूब वगैरह पे पड़े हुए हैं। It is actually very interesting, and I'm surprised that we are not talking about this openly. रियली People don't know about these stories, वी because वुड लव टू नो Indraprastha, the word, yes, it हाँ does जी appear, and the oldest manuscript of Mahabharata, I don't think mentions the five villages that Pandavas asked for. One of the later ओके manuscripts does mention those five villages, which were Sonprast, Panprast, Bagprast, Tilprast, and Khandavprast. In the Khandavprast, अच्छा they said that there was a Naga tribe, और हुँ, रादर दे सेड कि वहां पर नागों का वास है, तो नागमेध ओके, यज्ञ किया गया, नागों को मारा गया, उनकी हत्या की गई और अच्छा, इंद्रप्रस्थ शहर बसा दिया गया। अच्छा, अच्छा, तो बहुत लोगों ने ये कहना, वहीं से ये बात निकली कि दिल्ली की जो नींव है वो खून पे पड़ी है, और दिल्ली के जितने शहर, 7 बड़े शहर हैं, 8 छोटे शहर हैं, ये 15 शहर एक्चुअली बहुत ज्यादा कत्लेआम होने के बाद ही बसे हैं, और बाद में अंग्रेजों ने ओके, फिर वो पूरी एक दिल्ली बना दी। तो जी, पुराना नाम हमें इंद्रप्रस्थ मिल जाता है। उसके अलावा 3rd सेंचुरी BC के अंदर हाँ सम्राट जी, अशोक के टाइम पे हाँ जी, उन्होंने throughout the length and breadth of his empire, he installed rock edicts, and the pillars, the Ashokan pillars are quite famous. The rock edicts are quite famous. So one of the ओके, minor rock edicts exists in Delhi. ओह! It's in ओके, it's right behind Lotus Temple, next to ISKCON Temple, east of Kailash.
नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से उतर के इट्स अ 2 to 3 minute वॉक थ्रू द पार्क. So you, the अच्छा. moment Nehru Place metro station के पीछे जो पार्क है, if you cross हाँ through जी. that park, you can actually reach at ISKCON temple और उसके एक साइड पे is the Ashokan Rock Edict. अब मजे की बात यह है अगर 3rd century BC के अंदर यहाँ पर अशोकन रॉक एडिक्ट आ चुका था, तो इसका मतलब उस टाइम पे वो जो एरिया है जिसे आज की डेट में हम कालका गढ़ी या कालका के नाम से जानते हैं, जी. it must have been an important trade town. However, हाँ. this piece of information is completely absent from all the books. Reason being, all those books were written by the British, and this edict was found in 1970. अच्छा. And we never updated our books. So the books are from 1800s, and the narrative of history is continued since 1800s. What we found in 1970s never mentioned. However, what is mentioned from various records, which appear in 1800 and 1900 वाली सारी किताबों के अंदर, is that there used to be a king known as Raja Dhillu. And Okay. some mention it as Raja Dilip. Ptolemy mentions it as Raja Dilip, I think. And all other historians, be it Sir Syed Ahmad Khan or Bashiruddin Ahmad and the later ones, the British ones, they call him Raja Dhillu, जो कन्नौज के राजा थे. And when Anangpal Tomar established Mihirapuri या मेहरौली, तो मेहरौली का नाम पहले से मीरापुरी वहां पर एग्जिस्ट करती थी, बिकॉज जैन पट्टावलीज में मीरापुरी का जिक्र आया है. और जब अनंगपाल तोमर ने आके इसको मेहरौली को फर्दर डेवलप किया, तो उन्होंने इसका नाम चेंज के ढिल्ली का रख दिया, जो राजा ढिल्लू के नाम पे था, जो कन्नौज के राजा थे. तो बेसिकली एरिया कन्नौज के अंडर आता था ओरिजिनली जब बसा था. और मेहरौली वाज द फर्स्ट सिटी, एज इन जो अभी तक चली आ रही है. उससे पहले इंद्रप्रस्थ बन के खत्म हो गया. कालका के बारे में भी डोंट नो, छोटा सा गांव था, बाद में आबादी फैल गई. बट प्रॉपर मेंशन दिल्ली का कहा था. इनफैक्ट इफ यू बीन टू ओल्ड फोर्ट, अंदर एंटर करते राइट साइड पे एक म्यूजियम है. म्यूजियम के अंदर एक स्टोन स्लैब पड़ी हुई है जिसपे लिखा हुआ है, देशोस्ती हरियाणा आख्यों पृथ्वियां स्वर्ग सनिध दिल्ली काख्यापुरी तत्र तोमरस्ती निर्मता. देश हरियाणा जो पृथ्वी में स्वर्ग के समान है, वहां पे दिल्ली का नाम की पुरी है जो तोमरों ने निर्मित की है. एंड दिस स्टोन स्लैब वाज फाउंड फ्रॉम सरबन विलेज विच इज नियर रायसेना, जहां पर अभी राष्ट्रपति भवन है. तो वो सब डेवलप हो रहा था, खुदाई में से निकली थी. तो इस तरह के मेरे पास और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जस्ट द वर्ड ढिल्ली एंड ढिल्ली का ये कहां से आया, और बहुत सारे नाम है दिल्ली के. योगिनीपुरा कहा जाता था. कुछ लोगों ने कहा नहीं, राजा काकी की दरगाह है तो मेहरे वली से मेहरौली बना. कुछ ने कहा नहीं, मेहरा वाली माई योगमाया माता का मंदिर है तो मेहरा वाली माई से मेहरौली बना. इन शॉर्ट आई कैन स्पीक 30 minutes जस्ट ऑन दिस वन वर्ड दिल्ली. कि दिल्ली से ढिल्ली का, दिल्लू से दिल्ली का, फिर दिल्ली, फिर दिल्ली, फिर दिल्ली. ये ट्रांजिशन का चेंज भी अपने आप में बहुत लंबी स्टोरी है. सरप्राइजिंगली ये सब हमने कभी कुछ हिस्ट्री बुक्स या हमारे बैकग्राउंड में नहीं है. आई एम नॉट श्योर व्हाट द रीजन वुड मे बी, बट अमेजिंग. ये सोर्स आपकी जो भी है बहुत स्ट्रांग है. थैंक यू. अमेजिंग. सो आप अपनी बुक्स के बारे में बताइए. आई मीन आप यू हैड अ वेरी नाइस जॉब, यू हैड एन अमेजिंग जॉब टू डू, यू वर डूइंग वेरी वेल. व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द लव फॉर दिल्ली कि आपने इतनी बुक्स लिखी, इतनी रिसर्च आपकी डीप हुई? ऐसे क्या रिसर्च थी? व्हाट वाज पुलिंग यू एंड व्हाट आर योर किताब लिखी अभी तक, दूसरी अभी हाँ जी लिखी अभी तक एक ही है मैंने, मतलब जो पब्लिश हो जी चुकी है. जी. मेरी जो बाकी किताबें अभी पब्लिश नहीं हुई, बट कंप्लीट नहीं बट हुई. देयर इन वर्क, बाकी देयर इन वर्क, आई नो. सी थिंग इज, हाँ. एक किताब लिखने में मुझे 5 साल लग गए. So if you ever राइट. meet a person who says that I have written a non-fiction, especially a book on history, in या 6 months or 1 year, please pull out your diary and note down his name कि इसकी किताब कभी नहीं पढ़नी. आप 6 महीने साल में किताब लिख ही नहीं सकते सर. अच्छा. आई थॉट कि मैं कर लूंगा, बिकॉज मुझे क्या था, आई थॉट कि दिल्ली के अंदर तो 1300 मॉन्यूमेंट्स है, 1300 मॉन्यूमेंट पे कौन किताब लिखेगा बैठ के, मेरी तो राइट. सारी उम्र जाएगी पढ़ते लिखते वक्त. So I thought I'll start a Delhi Heritage series, and in हाँ. this series I'll do a series of top 10, as in top राइट. 10 Bauli, top 10 forts, top 10 this, top 10 that. And the easiest was Stepwell's Baulis, because मुझे पता है दिल्ली में 12, 15, 16 बाउलियां बची हैं, उनमें से 10 पे लिखना है. क्या ही मुश्किल है, हाँ. सब कुछ तो सामने दिख रहा है, वहां जा जाके मैं फोटो खींच चुका हूँ. अपने मुझे आपको सब डेडलाइन स्टोरी, भी दे दी थी? मैंने अपने आप को 4-5 महीने की डेडलाइन दी थी कि 4-5 महीने में अच्छा. मैं कर लूंगा. 4-5 बाप रे. महीने में एक बाउली की इंफॉर्मेशन नहीं मिली मुझे, एक भी बाउली की. बिकॉज व्हेन यू हैव टू राइट अ बुक, you need to cross verify everything that you know. That's when I realized that my information was all through blogs and Wikipedia, which are not reliable. या
बिकॉज Right. एक दो केसेस में वो सारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई एंड आई हैड टू गो बैक एंड वेरीफाई फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड आफ्टर Right. ऑलमोस्ट अ ईयर वाज स्पेंट I realized that the information is not available. Now what to do? I had signed the contract with the publisher. Publisher said देखो जितना टाइम लेना है ले but तू लिख दे. So I started learning Urdu. Okay. I learned Urdu. I mastered Urdu in few months. Side by side English के अपने आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स और सब जगह अपनी रिसर्च चलती रही मेरी. जब उर्दू सीख ली तो Wow. फिर उर्दू की किताबें जाके उर्दू एकेडमी से परचेज की. पर्शियन डिक्शनरी खरीद के पर्शियन वर्ड्स, क्योंकि स्क्रिप्ट सेम है तो मैं पढ़ पा रहा था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था. तो पर्शियन काफी हद तक समझ आने लग गई डिक्शनरी पढ़ पढ़ के. तो आर्काइव्स में जाके कभी फरमान निकालने की बात है या पुराने दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो Mhm. एएसआई के फोटो आर्काइव्स में पिक्चर्स ढूंढनी हो, चाहे वो नेशनल आर्काइव्स में रिकॉर्ड्स देखनी हो. Spent a Hmm. lot of time there, and that's Hmm. how this tiny book came into existence. After five Wow. years, it took me full 5 years of thorough research. Eventually, around 4 years Can we back, I see had the to. book again for the audience? Can we Yeah, see it again there you go. on the camera? So, Wonderful. around. And is this available on Amazon? Yeah, it's otherwise it is 399, but on Amazon I think it is 250, 270 bucks. Wonderful, wonderful. You should, They will send you. guys, whoever is listening, I think you should go ahead and buy this interesting book. I'm sure so much of time has been put in, so much of hard work. We should have a look at the book and see what kind of interesting things we can find out. Yes, please continue. Even I was surprised because when I got from ASI's archives during the Hmm. British period, they had made diagrams of many monuments, line diagrams and structural drawings and all. When I Okay. got all the drawings and I kept them next to each other, I found Right. out that most of the Baulis have a very particular orientation. Okay. So that's when I started digging deeper into it. That why Hmm. every Pauli has got entry from. Can you put me full screen for a minute? Sure. Will it be possible? I'll do I that. think then yeah, I just put think it it's for a minute. possible. Yeah, yeah, it is. No, you have to go to my name below that, where Yeah, you see my image, and there is a small icon I'm doing on that. top. Ah, yeah, that's better. So here you go. Now all these Baulis, if you see the arrows are from top to bottom. So when we did this comparative analysis, we found out that the Baulis, all of them have a direction. The steps lead from north to south. Only in certain cases we have from south to north, but in those cases the tank was covered from top. So okay, you can come back, Vikram. I'm done showing the diagram. So I was No surprised problem. Yeah. how why is that a case? And after a lot Okay. of discussion with architects and conservation architects, historians, different people, we found out it was actually sitting in a circle and just brainstorming, and just the idea came that we are in the northern hemisphere, which means Hmm. no matter what kind of weather we have, which season we are in, and what's the time of the day, at any given point of time, sun cannot be perpendicular. Sun will always Oh, remain to the southern side when it's moving. So sun moves from east to west, but given that we are in northern hemisphere and way above equator, yeah. above tropic of cancer, even sun rays will be slanting from south side even at Yeah. 12 o'clock noon. So if you keep the deeper side on the southern, in the southern portion, sun rays Hmm. won't reach water tank, which means water will not evaporate, it will not be Hmm. heated, so you can store water for a longer period. So in weather like Delhi, that was very important. And those Right. Baulis, there are three Baulis who have their tank on the other side. They don't have entry from north side. In those cases, tanks are covered from top. Okay. So these small things, how the concept of surface area and pressure works, how the concept of sedimentation works. So a lot of science went into this Yeah. while making these structures, and almost 1 year was spent just on studying the physics and the chemistry aspect of these buildings. And that's Wow. why I say that when you have to write a book, it takes several years. And my fourth book, last 2 years I've been writing, and my research has been going on from last 10 years now, and fourth book is still out of 10. I've done only 6 chapters so far. So Oh my August is God. my deadline from my So a lot of publisher. Again, yeah. Sorry, please. so you have to talk to a lot of historians and scientists, and your sessions must be going on. Kitna research hoti hogi. Must be having meetings with all of these historians every day. ज्यादा Must have worked बहुत really hard in those 5 years.
I'm really thankful to Sohail Hashmi Saab, Narayani Gupta ma'am, and all these people, because when I got my first manuscript done, I printed it, I gave it to Hmm. Sohail Hashmi Saab. Sir, please आप एक बार ये देखिए. He read each and every line. He also took 2-3 months, and during these 2-3 months, he would call me back, and उन्होंने सब जगह मार्क कर रखा होगा रेड पेन से, ऑरेंज पेन से, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है. और फिर मैं वो डिबेट करता था, फिर मैं जाकर इन्फॉर्मेशन ढूंढता था. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बाउलीज आई मेंशन्ड, मैंने पहले उसका नाम लिखा था मिहिर भानु की मंडी की बाउली. तो हुमायूं टूम्ब के अंदर एक बाउली है, ओके. मेरे को अच्छा. इंग्लिश बुक में उसका नाम मिला मिहिर भानु की मंडी. सो ओके. हाशमी साहब सेड कि ये एक यूनिक था, ये एक हिजड़ा था, ख्वाजा सरा था. हम्म. ख्वाजा सरा था, मिहिर हम्म. भानु डजंट मेक सेंस. हो सकता है मेहर बानो हो इसका नाम, क्योंकि अंग्रेजों को ये मैस्कुलिन फेमिनिन में बहुत इशू होता था, तो उन्होंने एक कंफ्यूजिंग सा नाम लिख दिया है. गो एंड चेक दिस अगेन. सो व्हेन आई रेड एन अच्छा. ओल्ड record, I found out that it is mentioned as Meherban Aga, meaning ओ. completely changes. So it is Meherban Aga की मंडी की बावली. और इंग्लिश बुक जो अंग्रेजों ने लिखी 1910 में, उसमें मिहिर भानु की मंडी की बावली लिखा हुआ है. पूरा चेंज अच्छा. हो गया. तो इस तरह की बाप बहुत रे. सारी चीजें मुझे मिली. कॉन्स्पिरेसी. अच्छा. और ये टाइपो, सॉरी. मे बी जस्ट अ टाइपो, यू मे बी नेवर नो. जस्ट अ टाइप. They were यू using नेवर नो. typewriters, and वो quickly tuck 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 tuck. You could have written anything. नो कमेंट्स. हो सकता है. ठीक है. सो इसके मतलब आई मीन सो मच ऑफ हार्ड वर्क गोज एंड उसके बाद व्हाट अबाउट दीस what has been the response from the book? Have what are people saying when they read your book? What is the response? My publisher told me that Vikramjit, you are quite famous. तुम्हारे फोटोग्राफी क्लब वगैरह अच्छा खासा चल गया, 20-25 हजार मेंबर हो गया, तुम्हारी किताब ज्यादा बिक जाएगी. सो वी आर प्रिंटिंग डबल द नंबर ऑफ कॉपीज दैट वी यूजुअली प्रिंट. तो Wow. अगस्त लास्ट ईयर द बुक वाज लॉन्च्ड. Hmm. अभी another 10 days later we'll be completing 1 year, एक हफ्ते बाद. So when the book was launched, they said we are printing double the copies that we normally do, और ये आपकी अगले साल अप्रैल तक चली Right. जाएंगी. अप्रैल में we will reprint. उसी साल दिसंबर में Wonderful. आउट ऑफ प्रिंट चली गई थी किताब. और अरे. दिसंबर में ही हमें एक पूरा लॉट दोबारा से प्रिंट करना पड़ा, जो अभी तक चल हाँ. रहा है. और अभी मुझे बताया गया कि सितंबर या अक्टूबर में वी विल गेट इनटू द थर्ड रीप्रिंट. Very So, nice. Very nice. and Congratulations on that. in two categories since August 2019, I have stayed in top 10, which is a big thing for a debut author. Wow. Amazon पे टॉप 10 में एक साल तक बने रहना, जहां पर हर 2 घंटे के बाद रेटिंग्स रिफ्रेश हो रही हैं. अगर रेटिंग नीचे गई भी, टॉप 15 में ही रहा हूं मैं, उससे नीचे नहीं गया अभी तक. इट हैज बीन So मोर देन much अ of ईयर नाउ. inspiration. I'm sure people are getting inspired to write. मैं इंस्पायर हो गया आपको सुन के. तो बहुत अमेजिंग है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई थिंक देयर इज अ लॉट टू डू अहेड. बहुत सारी चीजें हैं. टच वुड. एंड वो ये तो बात होगी किताबों की. इसके अलावा आप बहुत कुछ करते हैं. आप बाहर जाते हैं. यू गो फॉर सेशंस. सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी, आई हैव सीन सो मेनी पिक्चर्स ऑफ योर्स वेयर यू आर टेकिंग सेशंस. आप आईआईटी भी जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया ऑडियंस को. आईआईएम जाते हैं. इन स्टेजेस पे, इन क्लासेस में, इन लैब्स में, व्हाट आर द स्टोरीज यू वुड लव टू नो? Who are your students and what is happening? So I do multiple things. One is I do teacher training. So when I Okay. travel across India, I mostly travel. I go to schools across India where I Okay. train teachers, and I tell them how to use liberal arts and how to use history and heritage to अच्छा. to teach. So you can teach physics, chemistry, maths, anything if you can study history. अगर आपको हिस्ट्री अच्छा. अच्छे से आती है तो. And the secret behind that is that practically आप लोग स्कूल में जो पढ़ाते हो, it is all history. अब ध्यान से हम्म. देखिए, न्यूटन डेड, आइंस्टाइन डेड, पाइथागोरस डेड, गिव मी एनी नेम दैट वी टीच इन हम्म. स्कूल, सब मर चुके हैं. तो हम सही बात. प्रैक्टिकली सिवाय हिस्ट्री की और पढ़ाई क्या रहे हैं. तो हम्म. क्यों ना थोड़ा सा इसको देखने का नजरिया बदल दिया जाए, ताकि बच्चों के लिए हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट ना रह जाए. बिल्कुल. मैं लिबरल आर्ट्स की बात करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करता हूँ, मैं इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग की बात करता हूँ, मल्टी हम्म. इंटेलिजेंसेस की बात करता हूँ. सो आई टीच ऑन दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. और पुराने राइट. वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या होता था, उससे हम क्या सीख सकते हैं, हेलेनिस्टिक ग्रीस का एजुकेशन सिस्टम क्या था, रोमन एजुकेशन क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम क्या आया, एंड हाउ हम्म. कैन वी improve what we have today. So that's what I do basically. You know, when वंडरफुल. I दैट्स दैट्स इसके अमेजिंग. अलावा दूसरा काम मैं ये करता हूँ, जब मैं जो मेरे दिल्ली में जो स्कूल्स हैं
वहां पर I set up heritage labs where we play games, What is experiments. the heritage lab? If you can elaborate this, आप थोड़ा अगर बता सकें. It's like any other physics, chemistry, bio lab. We have got our own apparatus. Okay. अभी यहाँ पर मेरे आप सामने cards पड़े हुए हैं. So this हाँ. is a game that I've developed. In Okay. cards में क्या है? These are the princely state cards. So when अच्छा. India got independence, there were हम्म. many states जिनको बोला गया था तुम भारत के साथ अब मिल जाओ या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, तुम्हारी मर्जी है. हाँ. To be precise, there were 635 or 640 such states. Right. इनमें से there were about 83 states जिनको 11 या ज्यादा गन सैल्यूट मिले हुए थे, which means if the king would come enter a royal procession or a formal event or something, then 21 guns would be fired, 11 guns would be fired, 21 तोपों की सलामी, अच्छा. 14 तोपों की सलामी, वो सब होता था. So मैंने उन सबके कार्ड्स बना लिए, जिसमें Okay. जैसे अगर मेरे हाथ में ये सिक्किम का कार्ड है, सिक्किम वाज अ 15 गन सैल्यूट. सो व्हेन द जोग्याल ऑफ सिक्किम वुड कम, तो 15 बार गन फायर की जाएगी उनको वेलकम करने के लिए. अच्छा. एंड इन 1948, ये तो 1960 70s तक चला है, सिक्किम तो अलग रहा है, बाद में इंडिया में शामिल हुआ ये, बट बिल्कुल. 1948 में इनकी पॉपुलेशन थी 0.1 मिलियन पीपल एंड Okay. दे हैड 0.7 into 10,000 kilometer square. So we have given some criteria here. 333 years के लिए इस डायनेस्टी ने रूल किया और अच्छा. पूरा थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी. नाउ थ्रू दिस I can play more than 20 games using these cards. Political science की, English की, mathematics की. So basically what I do is, one is जैसे अभी ये इंदौर का कार्ड है. Most people don't even know that Indore was a separate state, independent state, or rather a princely Nice. state with 19 gun salutes. यानी कि सिक्किम Wow. से ज्यादा important इंदौर हुआ करती थी. And look at the flag, पोलैंड के Yeah. जैसा फ्लैग है इसका. So ये जो चीजें हैं ये so there are total 90 cards and people are not aware about these kind of things. So I use these kind of games. I've got board games for 1857, mutiny and all. तो इनके थ्रू फिर हम गेम्स खेल के बच्चों को पढ़ाते हैं. Very interesting. एंड कॉलेजेस दैट आई निफ्ट है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, आईआईटी हाँ जी, वगैरह, हाँ जहाँ जी. वहां पर सिंपल क्लासरूम सेशन होता है, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ डिबेट. लेस 1-2 घंटे मैं बोलता हूँ, फिर 1-2 घंटे बच्चों को बोलना होता है, फिर हम खूब बहस करते हैं, झगड़े करते हैं, सब कुछ करते हैं. एक डिबेट हो जाती है अच्छी खासी. You take डिबेट, full part. बिल्कुल Wonderful. बिल्कुल. Interesting होता होगा बहुत. So now अगर मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आफ्टर द लॉकडाउन वाला थिंग, ये वाला भी जो पूछे आपसे, आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इफ यू हैड ऑल द पावर्स इन द वर्ल्ड to do anything, what would that one thing be that you would do as a, history, as an activist that would change the world in terms of history and monuments? What would that be? You're one of the I powerful people. I would change the way we look at religion. मेरा बस चले मैं हटा ही दूं, but I really want to change the way, because we have become fanatics now, and it is not about any one particular religion. Almost every religion has become like that. हम लोग एक दूसरे की गर्दन तक काटने को तैयार हो जाते हैं, कोई सामने से कुछ बोल दे और हम सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है कि सामने वाला क्या कह रहा है. बस तुमने बोल कैसे दिया, कहाँ है मेरी तलवार. We get into that mode. Whereas no Yeah. religions never started like that. Religions, when they started, were nothing but a system of justice and a better lifestyle for the society. But we took it way too seriously, way too much seriously. So instead of learning from a religion, we started worshipping the religion. Instead of learning from our holy books, we started worshipping holy books. हम उसे समझते नहीं है, बस उसका रट्टा मार के दोहराते रहते हैं तोते की तरह, उस पे अमल नहीं करते. I would love to change that if I can. Everything would change. It would. I think that's a very nice And Vikram, answer. let me But add an example to that. please, Um, please, have you do you remember the flag of Israel? It's a of course. white flag, blue strips, and there Yeah. is a blue star in the center, which is known as the Star of David. Now, the Star of Yes. David is considered to be the one of the holiest symbols, amongst others, of the Right. Jewish community. And since Right. Jews have a long-standing problem with the Muslims, Israel, Palestine, we know, so Muslims do not use that six-pointed star which is over there on that flag. Yeah. और सऊदी अरेबिया में आप चले जाइए, कोई सिक्स पॉइंटेड स्टार बनाकर दिखा दे, वहां पर कलेश हो जाता है कि ये तो यहूदियों का सिंबल बना.
इंडिया के अंदर हर पुरानी मस्जिद, हर मकबरे पे ये स्टार बना हुआ है। दिल्ली में बिल्कुल। हौज खास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 से निकलते ही यू हैव मेफेयर गार्डन, अंदर जाइए मखदूम सब्जवारी की मस्जिद है, अंदर यही 6 पॉइंटेड स्टार है जिसके बीच में अल्लाह लिखा हुआ है। अब कुतुब मीनार जाइए, जो पहले पहल स्ट्रक्चर्स बने उनमें ये स्टार जगह जगह बना हुआ है, अलाई दरवाजे से लेके लास्ट में हुमायूं टूम, सफदरजंग टूम तक आ जाइए, आपको सफदरजंग टूम में नहीं है बट हुमायूं टूम में ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। जी। तो अगर ये स्टार इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में, तो ये स्टार सारे मुस्लिम स्ट्रक्चर पे इंडिया में क्या कर रहा है वो भी छोड़िए। हम्म। अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है अभी सेशन के बाद प्लीज उठाकर देखिएगा, पहले पेज पे यही स्टार बना हुआ है। बाहर ओके, अगर आई आपकी डिडंट कोई नो दैट। नोट नहीं खासकर किया। अगर वो खासकर अगर वो मारुति 800 है पुरानी वाली लाल रंग की जिसका सिर्फ शीशा उठता था, तो शायद उसके पीछे यही स्टार बना होगा, बीच में लिखा होगा माँ, लाल रंग से बना होगा। ध्यान रखना, बहुत लोग स्टिकर लगाते हैं 6 पॉइंटेड स्टार। इफ दिस 6 पॉइंटेड अच्छा। स्टार इज एसोसिएटेड विद देवी, तो ये इसराइल के राइट। फ्लैग पे क्या कर रहा है? और दोनों जगह ये रिक्वेस्टिंग। रिलीजियस है। परहैप्स वी डोंट स्टडी आवर रिलीजन द वे वी शुड स्टडी इट। आई आई एम श्योर बहुत ही अमेजिंग है आपने चीजें बोली हैं, एंड आई वुड से those are amazing. If you have those powers, I think you will change the world in a very different way, in a certain way we look at, तो वो नहीं होगा, right? You will change it in a very different manner. So do you think that we are on the right track? Are we moving on the right track? What is your plan ahead? I mean, besides the powers and the your point of views which you have, is there any certain way this education system should go in a direction, or everything is going fine? No, I don't. I won't say everything is going fine. However, what I would say is that whatever is happening will lead us Okay. somewhere. Whether it is good or bad, I'm not the one to comment on that. Though I'm not comfortable with the way things are happening, but again, Okay. I'm not the one to pass a judgment because Hmm. in past 5,000 years that I've been studying, the period of 5,000 years, things have happened which if I was there at that time, even I wouldn't have Hmm. accepted it. So sitting in 2020, I'm not accepting. But if I were in 1500 BC, I still wouldn't have accepted what was being taught at that time, the way it was. Today, it makes sense. So perhaps what Yeah. we are doing now will make sense after 500 years because eventually we will adapt or we will evolve into that kind of system. So yes, things can go way better. We are not doing it right. That's what I feel. Can we make it better? Well, I have done my part. I've left my job and become a teacher just to make it better. And we need more people to do that. I think then at least it will be simpler for those who are not able to reach that stage that I some of us understand. can. Yeah. So, do you think history is something which should be included more in the curriculums and syllabus systems of all the schools and colleges? And that something which will probably change things? And you are already on that mission. So, has it actually helped a lot of these education systems? And what is your take on it? देखिए, history is already there. It is there in a way. However, what we've done is we have made a separate subject out of it, which is actually a problem. We don't Hmm. need a separate subject. When you're teaching French Revolution, when French Hmm. Revolution was actually happening, was it history? No, it was history making. At that time, it was current affairs. It was politics. So Yes. shouldn't we be teaching that in political science instead of in the book of history? World War Yeah. should go in political science and not part of history. Hmm. Madame Curie discovering radium should be part of chemistry or physics and not part of history. Yeah. So history So the has to be there. bifurcation. You can check off the formal subject of history and you can bring in the history, that element or that chapter from history into its correct head. That this Okay. part. So when we launched Mangalyaan was way too cheap compared to all other missions that have Oh, ever yes. gone to that far. Okay, दिल्ली की Yeah. ऑटो रिक्शा से सस्ता पड़ा हमें मंगलयान, देखा जाए तो। Exactly. हाँ, even आज less से than Maruti 10 साल Suzuki के तो ऑटो बाद रिक्शा पड़ा। आज से 10 साल के बाद हिस्ट्री की टीचर उसको पढ़ा रही होगी जिसको ये नहीं बिल्कुल। पता है कि मंगलयान के अंदर जो रॉकेट फ्यूल डला है वो क्या था। उसमें घासलेट डला है, उसमें प्रोपेन डला है, ब्यूटेन डला है। प्रोपेन Point. ब्यूटेन में फर्क क्या होता है? But हाउ it डू will यू be part of एक्सपेक्ट history. एग्जैक्टली हाउ डू यू एक्सपेक्ट द टीचर टू डू जस्टिस? बच्चा पूछेगा मैम Yeah. थ्रस्ट क्या होती है, ट्रेजेक्टरी क्या होती है, और मैम देख रही होगी वो अच्छा फिजिक्स वाले टीचर कहाँ है, हमारे फिजिक्स वाले सर को बुलाइए। आप
इसमें हिस्ट्री मत बनाइए, इसे फिजिक्स में रहने दीजिए. Right. That's what my point is. Very interesting point of view. So, apart from that, what do you think? तो आजकल जैसे कॉलेजेस में लोग डिग्री लेते हैं या कुछ भी करते हैं, they probably go for different areas. I wanted, what actually my question was, that is history, can history be used in different forms in every subject? You said that you put history in every subject and probably teach it in a different way. The outcome is different. So I think probably the answer is somewhere near to what you said. But what I meant was, so for example, math है या कोई और सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर अगर हम हिस्ट्री को इन्वॉल्व करें और बताएं उसके बारे में, विल द स्टूडेंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट अ लिटिल बिट मोर? फॉर एग्जाम्पल, आर्यभट्टा है, उसकी कोई थ्योरी थी, तो पहले आर्यभट्टा के बारे में, व्हाट वाज ही डूइंग, हाउ डिड इट कम, does that story out of that history help in getting the outcomes and understanding the concept? Because अगर सिर्फ ये बता दिया कि इसकी बुक है, ये पढ़िए, आपको यही करना है, तो is that something which will bring a difference? Because after understanding what you do, मेरे को ये समझ में आ रहा है थोड़ा. टॉकिंग ऑफ लिबरल आर्ट्स, ऐसे नहीं होगा कि किताब देके पढ़ाना है, थोड़ा सा हम्म. तरीका अलग है. यू सेड हम्म. आर्यभट्ट. आर्यभट्ट Right. इज फेमस फॉर व्हाट? For आर्यभट्ट किस चीज के लिए for फेमस है? जीरो. zero, हाँ. Okay, now we say that Right. he invented zero. हाँ. Now, did he invent zero or did he give us the concept of shunya? हम्म. He must have said shunya because zero तो अंग्रेजी का शून्य टर्म है, बोला तो उसने था, शून्य कहा एग्जैक्टली. होगा. अब जो हमें शून्य शून्य, बताया. ऑब्वियसली संस्कृत में शून्य ही कहा गया होगा. शून्य जो है वो एक संस्कृत टर्म है जो पाली में भी राइट. आती है और जो भगवान बुद्ध के टाइम से एग्जिस्ट करती है. आर्यभट्ट तो उससे बहुत बाद में हुए हैं. भगवान बुद्ध ने राइट. शून्यता की बात की है, दैट व्हेन यू गो इनटू डीप मेडिटेशन यू हैव टू डेल्व डीप इनसाइड, एंड आपको अपने अंदर शून्यता तक जाना है. आप शून्यता मींस नथिंग, नल एंड वॉइड. सो शून्य इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल रियल्म. It's not a राइट. term of mathematics as per Buddhism. Much later, when Aryabhatta is born, and then he gives birth to the theory of decimal number or the fraction system. So he did invent fraction system, and he said कि मैं एक ऑब्जेक्ट को फर्दर ब्रेक कर सकता हूं, एक नंबर को फर्दर ब्रेक कर सकता हूं. तो जब मैं इस नंबर को फर्दर ब्रेक कर रहा हूं तो मैं एक डॉट लगा दूंगा, लेकिन डॉट लगा के मुझे कुछ स्पेसेस छोड़नी है, फिर एक नंबर राइट. लिखना है. इस स्पेस में क्या आएगा? यहाँ आएगा कुछ नहीं. कुछ नहीं का मतलब है शून्यता. तो उन्होंने शून्य शून्य शून्य, जीरो उन्होंने सिंबल उन्होंने बना दिया उसका एक. वहां से आया शून्यता. आर्यभट्ट नेवर गेव अस द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो. दैट्स व्हाट भास्कर एंड वराहमिहिर डिड. वराहमिहिर दिल्ली में बैठ के सूर्य सिद्धांत लिखते हैं. पंच सिद्धांतिकाएं हैं उनकी, जिसमें पहली सूर्य सिद्धांत है, जिसमें वहां से लेकर भरत संहिता तक जीरो की प्रॉपर्टीज डिफाइन हो रही हैं. भास्कर द फर्स्ट, भास्कर द सेकंड बता रहे हैं कि भैया जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, सब खत्म कर देगा. किसी चीज में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस करोगे तो डिपेंड करता है आगे बैठा है कि पीछे बैठा है. डिवाइड करोगे तो भी डिपेंड करेगा ऊपर बैठा है कि नीचे बैठा है. ये सब भास्कर और वराहमिहिर जैसे लोग दे रहे हैं. और आर्यभट्ट राइट. की एक भी लिखी हुई लाइन हमारे पास, ओरिजिनल टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. आर्यभट्ट का सारा काम वराहमिहिर ने कॉपी किया था, जो आर्यभट्टीज हैं. और राइट. वराहमिहिर को ये पता चला कि आर्यभट्ट ने कितनी गलतियां कर रखी हैं. वराहमिहिर एक्चुअली करेक्टेड द साइन टेबल्स ऑफ आर्यभट्ट एंड ऑल्सो गेव अस द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई, जो कि पुराने रिकॉर्ड्स में गलत चली आ रही थी. उसने मतलब थी, लेकिन सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक थी. इन्होंने उसको 4 से 5 डेसिमल प्लेसेस तक कर दिया, जो अगले 400 साल तक यूरोपियन वर्ल्ड नहीं कर पाया. एंड ऑल दिस टाइम टिल अबाउट 9th सेंचुरी हाँ तक जी. यूरोप के अंदर जीरो का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि चर्च ने ऑफिशियली जीरो पर बैन लगा दिया था. ओह. इसलिए बिकॉज दे सेड, जब इंडिया से जो नॉलेज है वो अरब पहुंची और अरब के अंदर हिसाब अल हिंद ये किताब लिखी गई, द मैथ्स ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर उन्होंने बताया दैट इंडियंस, जो हमारा वैदिक मैथ है वो मैथ एडिशन पे चलता है. तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ ऐड करके ही करते हैं. मल्टीप्लाई करना है तो रेपिटेटिव एडिशन, सब्ट्रैक्ट करना है तो इट इज एडिशन ऑफ द नेगेटिव नंबर, डिवाइड करना है इट इज रेपिटेटिव एडिशन ऑफ द नेगेटिव नंबर. तो एवरीथिंग इज एडिशन. दैट्स हाउ राइट. वैदिक मैथ वर्क्स. सो उन्होंने इसका नाम रखा अल जब्र. जब्र मींस जोड़ना, जो अरबिक वर्ड है. ये यूरोप जाके बन जाता है एल्जेब्रा. वहां से घूम के फिर हमारे पास आता है. तो एल्जेब्रा जब वहां पहुंचा तो उनको उन्होंने कहा यू टॉक ऑफ जीरो एंड जीरो वुड मीन नथिंग. हाउ कैन देयर बी समथिंग वेयर देयर इज नथिंग? नथिंग मींस नो गॉड, बिल्कुल नथिंग. राइट. ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं जहां भगवान नहीं है. तो इसीलिए हमारा जो कैलेंडर है
after -1, yeah, after 1 BC we have 1 AD. There is no year 0. Hmm. It doesn't exist. 13th Right. सेंचुरी में जाके वो पॉपुलर होता है, 9th सेंचुरी में वो पहली बार एक्सेप्ट होता है यूरोप के अंदर. एंड वाइल वी वर प्लेइंग विद दोज नंबर्स फुल, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर हम खेल रहे हैं जीरो के साथ, और उन्होंने सो अब सिंपल सी मैथ का ही, मैथ में मैं जीरो और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले अगर ये स्टोरी सुनाता हूँ और यहाँ से अपनी क्लास शुरू करता हूँ, मैं आपको एक और थोड़ा सा Exactly. कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे देता हूँ. हाँ, पाइथागोरस चचा का नाम आपने सुना होगा. बिल्कुल. इनका पूरा नाम है पाइथागोरस ऑफ सामोस, क्योंकि ये सामोस नाम हाँ, के आइलैंड पे रहते थे, और इन्होंने थ्री हाँ. डी ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट हमें दिया था. ग्रीस में ये आइलैंड है. Hmm. ग्रीस से ही एक और शख्स निकलता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर. लोग Right. जोश में आते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं. यहाँ आके बीमार पड़ गया था बेचारा पूरे से लड़ते लड़ते. अलेक्जेंडर के रिकॉर्ड्स में हमें पता चला है कि द फेवरेट फूड ऑफ अलेक्जेंडर वाज अ 3D ट्रायंगल शेप्ड पैटी, जिसमें वो कीमा भर के खाता था, फ्राई करके. अच्छा. तो Okay. वो पैटी आज भी इंडिया में चलती है. अब 3D ट्रायंगल, पाइथागोरस, सामोस, मुझे नहीं पता क्या कनेक्शन है, बट उस पैटी को आज हम समोसा कहते हैं. Okay. अब हो सकता है कि it's a pure coincidence. I mean, completely random coincidence. There is a high probability because I've never found any written evidence connecting them. We don't even know Okay. that whether or Alexander ever knew about Pythagoras or not. Or maybe Pythagoras समोसा खाते खाते उसको आइडिया, यार इसकी जैसे न्यूटन के सर पे सेब गिरा था तो उसको ग्रेविटी समझ में आई, जो कि उससे 1200 साल पहले वरामीर बोल चुके थे ग्रेविटी की बातें, लेकिन न्यूटन को तब समझ में आई. तो वरामीर ने बृहत संहिता के अंदर गुरुत्वाकर्षण की बात की कि पृथ्वी गुरु है और वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो गुरुत्वाकर्षण पे उन्होंने एक चैप्टर लिखा उसके अंदर बृहत संहिता में. एनीवेज, इन्होंने क्या पता समोसा देख के 3D ट्रायंगल की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी हो. रेट कैलकुलेट करना हो कितना कीमा जाएगा, मुझे सरफेस एरिया बताना है उसका, कितना मैदा चढ़ा उसके ऊपर, यू नेवर Right. नो. बट एटलीस्ट मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इसमें से निकल गया है बातों Hmm. बातों में. बिल्कुल. सो गिव मी Very एनी interesting. सब्जेक्ट, So आई टीच यू थ्रू हिस्ट्री. this is what I mean. That before talking about anything, what if this kind of an interesting session goes about the history part, and probably the concentration and understanding actually increases. That is what I meant. So this is the pure example of my question. आपने exact answer वही दिया, so thank you so much. I think the audience will also understand what I was trying to say. That before coming up to any subject, whether it's maths, it's literature, it's anything, everything involves history, as rightly said by Mr. Vikramjit. And this example exactly proves my point. Thank you so much for this. And in the end, I would just like to ask you that ऐसी कौन सी जगहें हैं, बाउलीज हैं कितनी हैं, और ऐसी कौन सी जगह हैं जो डेलीइट्स, आज की जनरेशन, जो आज यंग बच्चे हैं और जिनको जो हमें फॉलो करते हैं, उन सबको आप बताना चाहेंगे दे शुड विजिट, दे शुड गेट टू नो मोर अबाउट इट, दे शुड ट्राई टू प्रिजर्व इट एंड कीप ऑन हेल्पिंग यू एंड द ह्यूमैनिटी टू कीप ऑन प्रिजर्विंग थिंग्स इन दिल्ली. क्या हम उनको बचा सकते हैं, क्या ऐसी कैसी मूवमेंट्स निकाल सकते हैं, और क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज व्यूअर्स टू नो अबाउट इट. See, I started about 12 years ago something called Delhi Heritage Awareness Club. यस. आया था, मेरे साथ कोई नहीं चला, किसी को अवेयरनेस से कोई मतलब नहीं था. मैंने उसका जी. नाम चेंज कर दिया. मैंने अवेयरनेस की जगह वर्ड डाल दिया फोटोग्राफी. सो इट बिकेम दिल्ली ओह. हेरिटेज फोटोग्राफी क्लब. ओके. आज 22,000 मेंबर है उसके 11 साल के बाद. एंड यू नो, जब मैं अपनी, अब तो मैंने खैर वॉक्स वगैरह काफी टाइम से बंद कर रखी है, कई साल हो गए बंद किए हुए, बट एट द जी. पीक ऑफ इट मेरी वॉक में 200 250 लोग पहुंच जाते थे. ओके. जबकि दिल्ली में वॉक लीडर्स को 10-15 लोग जुटाने मुश्किल हो रहे थे. वो 200-250 इसीलिए पहुंच पा रहे थे क्योंकि जो मेरा कंटेंट होता था, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन डीप रिसर्च, और मैं ओके. उन जगहों को ढूंढ के लाता था जो प्लेन सिंपल टूरिस्टी प्लेसेस नहीं है. और हम लोगों को यही तो जरूरत है. अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, दिल्ली में 1300 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स का जिक्र आया है. कितने मॉन्यूमेंट्स राइट. हैं जो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं? बहुत कम लोग हैं जो मेरे को आज तक 10 मॉन्यूमेंट भी कंफर्टेबली उंगलियों पर गिनवा पाए हैं. Qutub राइट. complex alone, Qutub complex has 12 different monuments and they are from different periods. You can see that picture behind me, Qutub Minar की. राइट. Qutub Minar की इस पिक्चर के अंदर there is an arch, there is the iron pillar. Iron pillar के पीछे छोटे पिलर्स हैं, अभी तो खैर दूर है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा होगा. That's But actually a very famous picture. I've seen it a lot of times. बहुत famous this है is ये फोटो. this is my picture. It has won few awards also. Wonderful. Wonderful. And That's why right it's always on Google. It's everywhere.
हाँ, ये बहुत जगह है। और हाँ। ये पिक्चर इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये पिक्चर आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। सुपर मून के टाइम पे खींची गई थी, तो अगले 1000 साल में ये फोटो दोबारा नहीं आ सकती। एंड आई वाज द ओनली गाय ओह। देयर पिक्चर रात को करीब 10-11 बजे का टाइम पे। स्पेशल परमिशन 6 महीने पहले लेके रख ली थी क्योंकि सुपर मून होने वेरी वाला है। प्रेशियस। पेपर वर्क करके रखा था। एंड वेर एवर आई गो आई स्टडी द मॉन्यूमेंट पहले अच्छे से, कई हफ्तों तक उस एरिया को, स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद आई अप्लाई फॉर द परमिशन एंड देन आई गो। और इस जगह पर मैंने सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स क्लिक की थी, और उनमें से एक ये है, दूसरी वाली में थोड़ा सा वो बहुत प्रॉपर नहीं हुई थी, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। So this is a ओके। better one. But what is so special about this picture that there are pillars पीछे इसके अंदर, those राइट। pillars are from तोमर period, और उसके अलावा कुछ जो है उसमें चौहान पीरियड से हैं। जो आयरन पिलर उसके बीच में लगा हुआ है दैट कम्स फ्रॉम गुप्ता पीरियड, फ्रॉम विक्रमादित्य टाइम। या। जो आर्च बनी हुई है दैट कम्स फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मीनार आप देख पा रहे हैं कुतुब मीनार, उसकी पहली 3 मंजिलें इल्तुतमिश की बनाई हुई हैं। ऊपर की 2 मंजिलें जो है वो फिरोज शाह तुगलक की बनाई हुई है। और साथ में अलाई दरवाजा है जो खिलजी के टाइम का है। Okay, you have वाओ। to excuse me for 1 minute. I think there's someone on door. Just give me. नो वरीज। सो जैसे कि आप जानते हैं, वी आर having a very interesting session. Please stay with us. Mr. Vikramjit ji will be he'll be back very soon. I'm sorry. I'm And he's sorry. back. That was quite fast. Yeah, someone was knocking on the door, so and that Yes, you was were my son. saying. Hanji, no worries. So yeah, so yeah, and you know all this click during super moon, and there is only one particular angle जहां से ये सारा कुछ एक फ्रेम में फिट हो सकता था at a particular time, जो कि मुझे Hmm. पहले से स्टडी करना पड़ा यूजिंग ऑल दोज एस्ट्रोनॉमी एप्स कि कहाँ किसकी क्या पोजीशन होगी, कौन से प्लेनेट की, कौन से स्टार की, वो सब स्टडी करके, वेदर स्टडी करके, पूरी Right. प्लानिंग करके आई वेंट देयर। सो Hmm. अगर आपको किसी मॉन्यूमेंट पे जाना होता है तो पहले उसके बारे में स्टडी कर लीजिए। अच्छा विक्रम, हैव यू बीन टू ताजमहल? Of course, I've been there. Yeah. हैव यू क्लिक दैट फोटोग्राफ? जैसे आप गेट से एंटर करते हैं, जब पहली बार ताजमहल नजर आता है, आपने वहां से फोटोग्राफ खींची है क्या ताजमहल की? हाँ, I've clicked it. जस्ट इमेजिन रोज 30-40 हजार लोग पहुंच जाते होंगे ताजमहल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि 20 हजार बिल्कुल। तो लाख ही आते हैं। तो मैं वहां से हाँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, 30 हजार तो पहुंचते होंगे ताजमहल में। इजीली। वो तीस इजीली। हजार के 30 लोग वहां खड़े होकर फोटो खींचते हैं। हाँ। कोई उसकी ताजमहल की चोंच पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, बट इन फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव। कोई वहां टेबल यस। पे बैठ के खींचता है, बट उस गेट से हर कोई बिल्कुल। खींचता है। आपकी फोटो अलग कैसे होगी? How it will be special for you? So for that, you need to understand Taj Mahal is not the burial site of Mumtaz. Taj Mahal is the burial site of Mumtaz Mahal, Shah Jahan, and 2 other wives of Shah Jahan. The राइट। only difference is गार्डन के इस तरफ है बाकी की दोनों बीवियां। हम्म। सो अगर आप वहां से फोटोग्राफी अपनी स्टार्ट करेंगे, पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। आप कैसे वेरी उसकी तरफ वेरी देख, गुड इनसाइट। हम्म। पीछे मेहताब बाग में जहां पर पानी में उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है, एक हाँ। वेंटेज पॉइंट है, सिर्फ वहीं से पूरा व्हाइट ताज नजर आता है, उसकी ब्लैक रिफ्लेक्शन, कंप्लीट मिरर इमेज नजर आती है, जिसकी वजह से बैक साइड को ब्लैक ताज कहा जाता है। इफ यू नो दैट राइट। स्टोरी, देन यू कैन एक्चुअली क्लिक बैक ब्लैक ताज। बट यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट, साइंस बिहाइंड दैट, कि एग्जैक्ट किस वेंटेज पॉइंट से वो ब्लैक ताज बनता है। या। बनाना नहीं था उसने, सिर्फ वो रिफ्लेक्शन पड़ती है, वो ब्लैक ताज वहां दिखता है ऑलरेडी पानी की रिफ्लेक्शन। तो वो जो चीजें हैं, जब तक आपको पता ही नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट के बारे में, आप स्टडी नहीं करेंगे, बचाने का कोई फायदा नहीं राइट। है। By the एंड way, you know, when आई डाउट। सॉरी। या। so I teach photography at many places, and when I teach photography or when I take people for photography walks also, my first राइट। rule is कि अगर आप इस monument पे लाइफ में पहली बार आए हैं, you are not allowed to जी। take out your camera. Phones and cameras should be away. Probably keep it in your car. Take a full round, दीवार के साथ साथ बाहर बाहर चक्कर लगाइए, फिर जाके अपना कैमरा उठाकर आ जाइए। ओके। क्योंकि लोग अंदर घुसते हैं, मेन स्ट्रक्चर पे भागते हैं, आसपास की चीजों जहां पर एक्चुअल खजाना छुपा हुआ, कोई देखता ही नहीं है उसको। वेरी नाइस। सो इज दिस स्टिल मॉन्यूमेंट्स ऑन द ग्रुप गोज? आप जाते हैं अभी भी? एवरीथिंग इज रेगुलर? मैं खुद नहीं अब जाता हूँ, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे वी आर डूइंग रियली गुड। इंस्टाग्राम पे तो अच्छा। खासकर, इफ यू लुक एट दी है, तो अभी हमने नाम चेंज करके उसको कर दिया दी हेरिटेज फोटोग्राफी क्लब। So if you go on ओके। Instagram, ग्रेट। Heritage Photography Club, we had to drop the name Delhi because all over world से photographs आ रही थी। So the Heritage Photography Club पर अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे इतने मजेदार photographs। Sometimes when even I वाओ। feel low, I just switch on that club and I just explore photographs. So abhi, वाओ। because I spend all my time in my classes and traveling, I'm not able हम्म। to do these walks from almost 2-3 years now.
बट Okay. लॉकडाउन इज ओवर। मैंने इस साल जनवरी में एक वॉक की थी। लास्ट ईयर मैंने Right. पूरे साल में सिर्फ 2 ही वॉक्स की थी पब्लिक के लिए। अदरवाइज मैं Hmm. अपने स्टूडेंट्स की ज्यादातर जो क्लासेस है वो फील्ड में कंडक्ट करता हूँ। तो जब मैं एनआईएफटी में पढ़ाता अच्छा. हूँ, सामने सेरी फोर्ट, हम सेरी फोर्ट में जाके क्लास कर लेते हैं। आई हैव दैट लिबर्टी, आई कैन टेक देम आउट। Wonderful. सो हमारी क्लासेस ही Wonderful. मॉन्यूमेंट पे होती That's awesome. और कौन कौन से monuments हैं ये? For example, कहाँ कहाँ जाते हैं आप? है। ओके, माय वेबसाइट इज monumentsofdelhi.com, वन ऑफ माय वेबसाइट्स। 350 ठीक है. मॉन्यूमेंट तो मैंने उसी पे डाले हुए विद लोकेशंस। Wow. तो अगर मैं रोज का एक तो वहां पे मॉन्यूमेंट जाके भी, सब देख सकते हैं. बिल्कुल लोकेशन मिल जाएगी आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मुझे और डाली, मुझे टाइम नहीं मिला उसको कंप्लीट करने का। माय टारगेट वाज टू Okay. पुट ऑल 700 मॉन्यूमेंट्स विद फोटोग्राफ्स, बट Okay. 6-7 साल से मैं उस पर काम ही नहीं कर पाया, उसको टच भी नहीं किया है, तो वो बीच में रुकी हुई है। और अभी कुछ Wonderful. इन्फॉर्मेशन सिवाय मैप के और कुछ डला नहीं है अभी The plans उसमें। बहुत ऐसा हैं आगे अभी फिर तो. काम बहुत ज्यादा है, प्लान्स भी हैं, बहुत बट काम है यार. टाइम कैसे टाइम। आप? How do you manage so much of work and personal आई life ट्राई and कैसे manage कर लेते हैं आप? आई ट्राई टू I won't say that I am acing it or I'm doing very Mm-hmm. good in that field, but I still try to manage somehow. I can totally understand because there's so much to do. हालांकि it's no one is perfect. Everyone's trying to manage things. But I think it's great. It's an awesome thing you're doing, and I wish you all the very best for this. Thank I you. I we come to the end of the show, and I would like to ask you if you can give a message, a very special message to all the Delhiites from your side. It'll be very helpful for people to know and take the message forward and maybe join your community and accordingly follow you. So, what is the Okay. message you would like to give to Delhiites and Delhi NCR, in fact? So, I love all of them. So if you have to follow me everywhere, I go by the handle Delhi Heritage. मेरी किताब का Okay. नाम भी दिल्ली हेरिटेज टॉप 10 है। ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी आई एम दिल्ली हेरिटेज। तो Acha. एवरीवेयर आई एम दिल्ली हेरिटेज। As far Okay. as the message is ठीक है. concerned, you know about corporate social responsibility. Yes. CSR. Corporate social responsibility CSR के तहत companies have to do some sort of social work. Yes. Thing बिल्कुल. is, उनकी वो मजबूरी है, जरूरत से ज्यादा पैसे कमा लिए, अब गवर्नमेंट कह रही है 2% लगाओ सामाजिक कार्य में। वो करना नहीं जी. चाहते लेकिन उन्हें करना पड़ रहा है, और उसमें वो अपनी एनजीओ बना के उसी को पैसा देते हैं और घुमा के अपने पास एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में या इनडायरेक्ट बेनिफिट के फॉर्म में ले आते हैं घूम फिर के। Why do we have to wait for government or these CSR people to come and do something for us? Where is our individual social responsibility? हम भी तो जी. आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मॉन्यूमेंट्स इंडिया में बहुत बुरी हालत में है, गंदे हैं, गंद पड़ा हुआ है, भाई मुझे बताइए कौन से मिनिस्टर ने आके वहां चिप्स का पैकेट फेंका था? मिनिस्टर नहीं आते ना। There is only बिल्कुल. one event in India, official event, where any minister from any state or center government has to go to a monument. That is 15th of August, when Prime Minister has to हम्म. go to Red Fort. Otherwise, ऑफिशियली किसी मिनिस्टर को किसी मॉन्यूमेंट पे जाने की जरूरत नहीं होती, और वो जाते हम्म. भी नहीं है। अगर कोई रिबन काटने जाना हो या कोई भाषण देने जाना हो, कोई मिनिस्टर मॉन्यूमेंट पे नहीं जाता। आप और मैं गंदा बिल्कुल. करते हैं उसको, तो फिर मिनिस्टर या गवर्नमेंट आके क्यों साफ करेगी? हमने गंदा किया, हम ही साफ करेंगे ना। राइट. दीवारों पे जो स्क्रैचिंग की है वो किसी हम्म. एमएलए ने तो की नहीं है, या एएसआई के डायरेक्टर ने तो आखिर करी नहीं है, आपने सही मैंने बात की है. है। हमें अपने आप को रोकना है, हमें अपने आप को एजुकेट करना है ना। सो माई ओनली पॉइंट इज, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स एंड स्टॉप वेटिंग फॉर अदर्स टू कम एंड एक्ट। when you are capable, God has given you 2 hands, 10 fingers, please put them to use। एक मतलब 5 साल में बटन दबाया, इतना से काला निशान लगा के फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाल दी कि मैंने वोट डाल दिया है, 200-400 लोग सिलेक्ट करके मैंने वो कर लिया इलेक्ट अपना काम. गोल सी बिल्डिंग में भेज दिए। अब जो करेंगे वो 400-500 लोग करेंगे, गोल बिल्डिंग वाले, बाहर 100 करोड़ लोगों की छुट्टी, हमें कुछ नहीं करना। ट्रू. ऐसे देश नहीं चल सकता। वेरी ट्रू. एंड व्हाट डू यू थिंक द यूथ कैन डू फॉर टू प्रिजर्व दीज मॉन्यूमेंट्स? आज का यूथ क्या कर सकता है? Why did I leave my job? Because I realized that nobody else is there to do. Someone has to start it. तो मैं तो छोड़ के लग गया, देयर हैव टू बी लेकिन मोर इनिशिएटिव लाइक दीज. हर कोई छोड़ नहीं सकता। मैंने भी पहले दिन नहीं नहीं छोड़ा छोड़ था। सकते. मैंने स्टार्टेड माय जॉब, उसके 4-5-6 साल के बाद मैं हेरिटेज के उसमें पढ़ा, और फिर मैंने अपनी जॉब को और 6-7 साल कंटिन्यू किया।
उसके बाद मैंने जॉब जी। छोड़ी जब मेरा यहाँ पर एक पूरा वो फील्ड बन चुका था, और छोड़ के मैं हेरिटेज वॉक्स और वो टूरिज्म के चक्कर में नहीं पड़ा, मैं पढ़ाने के लिए आ गया। हम्म। मैंने वॉक्स बंद करके, एक्चुअली जॉब के साथ मैंने वॉक्स भी बंद कर दी अपनी। जब तक जॉब थी सैटरडे संडे वॉक्स करता था मैं, हम्म। क्योंकि मुझे लगा कि स्कूल के लोगों को ज्यादा जरूरत है। तो right, प्लीज आइडेंटिफाई कि आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कितना कर सकते हो, गेट इन टू इट। यू डोंट हैव टू लीव योर हम्म, वर्क और जॉब फॉर दैट। बीच में टाइम निकल जाएगा। right. That's indeed a very good message, and I think rightly said. CSR, अगर हम CSR के एक तरीके से हम contribution करें, we collect some funds, we take out movements where we collect funds, we take initiatives, and I think it's not even funds. You bring a group of people together, you run a I'm not, movement, you make yeah, groups on Facebook, you try to save all these monuments. It's very easy. I think बिल्कुल just फंड। like people come out on roads in Mumbai, they start grooming even the actor actresses. They start grooming the roads. एक इनिशिएटिव या आता है, आपने देखा होगा कई बार। उसी आई तरीके नो, से मूवमेंट्स के लिए क्यों नहीं कर सकते हम? मैं कह तो रहा हूँ आपको फंड्स चाहिए ही नहीं। अरे हम्म, बहुत सारे स्कूल्स हैं नहीं जिन्होंने चाहिए। अडॉप्ट किया कई मॉन्यूमेंट्स को। मैं कईयों को जानता हूँ, मैं एसोसिएटेड हूँ कईयों के साथ, उनको गाइड करता हूँ कि हम्म, कहाँ जाके क्या करना है। कुछ नहीं, वहां जाके हम क्लीनिंग कर लेते हैं, बेसिक क्लीनिंग। हम कोई ये तो कर नहीं रहे कि आप मॉन्यूमेंट को रिस्टोर कर रहे हो, आपको सिर्फ साफ सुथरा राइट। रखना है, अवेयरनेस फैलानी है। साफ सुथरा रखो। ये तो कर हाँ, ही सकते हो ना। बिल्कुल। मैं कितनों के साथ जुड़ा हुआ, ऐसे ही जहां हम जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को पहले एजुकेट करते हैं, फिर बच्चे जाके आसपास की कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप गंदा मत करिए। बच्चे जाके एक बार साफ कर देते हैं, फिर वो रोज रोज वहां पर यहाँ 2-4 दिन में रोटेशन पे जाते रहते हैं, ताकि ध्यान रखें उस जगह का कि वहां कोई डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही, वेंडलिज्म तो नहीं हो रहा है। सो बट विक्रमजीत, कम्युनिटी। मैं एक पॉइंट सॉरी बीच में रेज करना चाहता हूँ एक्चुअली। होता क्या है दैट वी अंडरस्टैंड दिस, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस, but what if the children out there who are not as lucky to have that kind of education, they don't know what these structures are? What about them? We should have those education. That's what Yeah. I'm saying. That you and I can do that also. I was working with Hmm. this one group, Mothers International School ने जाके पीछे बेगमपुर मस्जिद विजय मंडल को अडॉप्ट किया था। तो Hmm. वहां के बच्चों ने जाके पूरे एरिया को एजुकेट किया पहले, वॉक्स करी, कई अच्छा। कुछ करा। उन बच्चों को पहले सोहेल आशमी साहब, नारायणी गुप्ता मैम, मैं पहुंचा, हम कईयों ने जाके कई वर्कशॉप्स की, हमने बच्चों को ट्रेन किया। और 12th क्लास के Okay. और 11th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने जाके पूरे बेगमपुर और मालवीय नगर के आसपास, जो मतलब जो बिल्कुल आसपास, सराय शाहजी, बेगमपुर और सरप्रे विहार, यहाँ के लोगों को घर में अच्छा। जाके एक एक घर की बेल बजा के लोगों को इकट्ठा किया और एजुकेट किया। That's सो nice. Very nice. ये दिस अच्छी कैन चीज बी है। डन। एक जगह नहीं, बहुत जगह किया है मैंने। मेहरौली के अंदर कईयों के साथ किया है, कितने ग्रुप्स को ट्रेन किया है। मैं सरहंद जाके ट्रेन करके आ चुका हूँ। मैं वाओ। जलंधर लुधियाना में कर चुका हूँ, मैं उड़ीसा में जाके कर चुका हूँ, मैं असम मणिपुर जाके ये काम कर चुका हूँ। वहां के लोकल कम्युनिटी को एनेबल करना, ताकि वो अपने आसपास पे बाकी लोगों को एनेबल कर सके। Wonderful. Great initiatives. I am very happy that we have someone who is thinking about our history, who's actually taking care of this. I think the souls out there, all the forefathers, or everyone in the history in the past will be very happy to see all of this working out. And we wish you all the very best. Uh, we'll try to give as much, contribution and as much volunteers as much as possible. दिलिस्तान पे हम लोग जितने लोग हो सकते हैं, आपका कोई इनिशिएटिव हो या कोई चीज हो ऐसी जो आप रन करना चाहते हैं, लाइक अ मूवमेंट, वी आर वेरी मच ओपन टू इट. We will be very happy to share it on our platform, and we are always supporting you as much as थैंक possible. यू, थैंक्स अ लॉट, Thank थैंक्स अ you. लॉट। It was a wonderful interview, and thank you so much again for coming. And we'll be in touch. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. सो ये थे विक्रमजीत सिंह रूपराय जी। एंड जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव्स लिए इन्होंने, और बहुत ही कम, जितना ये डिजर्व करते हैं, जितनी लाइमलाइट आई थिंक उससे बहुत कम थी. He should definitely be seen. He should definitely be followed. And जितना हो सकता है आप इनको जाके फॉलो करिए. दिल्ली हेरिटेज पेज है, विक्रमजीत सिंह रूप राय जी का अपना एक फैन फॉलोइंग है, आप देख सकते हैं जाके. विक्रमजीत जी की एक वेबसाइट है जहाँ पे उनकी इनिशिएटिव्स और उनकी टीचिंग्स है, उनका अपना यूट्यूब चैनल है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डेफिनेटली, इट्स एन एग्जाम्पल of something very amazing, that where we are, there are human beings who are actually respecting our history. It's our actual responsibility to preserve all of these. आज हम भी कुछ बनाते हैं,
एक छोटी सी चीज बना देते हैं तो वी टेक केयर ऑफ इट सो मच। उसका कॉपीराइट करेंगे, उसके लिए प्रोटेक्शन करेंगे। हम लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कुछ ऐसी चीजों का जिनका हमें पता भी नहीं है। तो व्हाई नॉट फॉर मॉन्यूमेंट्स एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम एक मॉन्यूमेंट कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं बना सकते? लेट्स टेक आउट सम इनिशिएटिव्स, लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। वी वुड लव टू हैव योर initiatives or your ideas on our inbox, दिलिस्तान पे। we'll take it forward। हम आपकी वीडियोस, आपके मैसेजेस के लिए वेट कर रहे हैं। we'll put it on our page। Do send your feedback about this interview। Thank you so much for watching this show। It was an amazing interview with him, and I look forward to such amazing people। I have so much learnings। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आई एम श्योर दिल्ली ऑडियंस को तो, और दिल्ली एनसीआर एंड पैन इंडिया ऑडियंस को तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ये मेरा सौभाग्य है एक तरीके से कि मैं आपसे ये सारी चीजें शेयर करता हूँ। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वेरी वेरी a lot of more very interesting guests। नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलते हैं 7 p.m चैट ट्रैप शो पे विद विक्रम सिंह रावल। मैं आपके साथ आऊंगा फिर से विद अनदर शो। कल एज यू नो पुपुल का शो है विद अनदर सेशन शी हैज। एंड स्टे ट्यून्ड टू दिलिस्तान। And thank you so much for the recent amazing views। We've crossed more than 20 lakh views on one of our videos, and thank you so much for that। हमारे पास बहुत viral content आ रहा है। 20 lakhs is a mark we have reached on a lot of videos। total watch time हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। I really thank all of you। We are now on YouTube। You have to also follow us on YouTube। There are a lot of interesting content जो हम यहाँ पे बातें करते हैं वो YouTube पे है। उसके अलावा बहुत interesting content आपको वहाँ मिलेगा। So thank you so much। It was wonderful talking to all of you guys। Love you all, and stay supportive like you are to Dillistan। Thank you।